हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. ये दिवाली आपकी खुशियों भरी हो. तो अभी हम देखेंगे इंडिया ब्रिंग्स बैक 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम लंदन. और वाह, चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. मैं कह रही हूँ दिवाली के दिन पैसा आ रहा है अपने देश में. और ये कौन सा है जो इन्होंने ये चोरी करके लेके गए थे ब्रिटिश टाइम वो वाला कोई पैसा है क्या गोल्ड? मैं तो ये जो हमारा वहाँ पड़ा हुआ था वापस आ रहा है शायद. ओ, उसकी न्यूज तो बहुत पहले भी एक बार हमने सुनी थी कि आएगा शायद. तो मतलब अब आया है. वाह. और मोदी जी ने इसका मतलब खास सोच के टाइम डिसाइड किया होगा कि दिवाली के टाइम वापस आए. कमाल है यार. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. Yesterday was Dhanteras in India, a festival that comes right before Diwali. A lot of Indians like to buy gold on this day. It's seen as very auspicious. Just ask the RBI. Even they have jumped in on the Dhanteras craze. As you know, the RBI is India's central bank, the Reserve Bank of India. Yesterday they revealed a key development. The RBI secretly shipped 102 tons of gold from London to India. Secretly 102 tons of gold, and this was not a purchase. This gold already belonged to the RBI. It was only stored in London. But imagine the logistics. Again, we are talking about 102 tons of metal. It's like transporting 20 adult elephants over thousands of kilometers. Wow. So how did the RBI do it? Naturally, they have not revealed everything, but reports say special flights were chartered, security was stepped up, and once in India, all taxes and customs were waived. Overall, a successful mission. The RBI has vaults in Mumbai and Nagpur. Chances are the gold will be stored there. Wow. But why was this decision taken now? अपना सोना वहाँ क्यों रखेंगे? We must go back to the 1990s when India was facing a financial crisis. It was running out of dollars to import goods. So the then government of India decided to pledge its gold. We're talking about multi-million-dollar loans. You can't get them in your local gold market. You need global trade centers like New York or London. So the RBI sent tons of gold to the Bank of England. This gold was pledged there in exchange for a loan. Of course, the loans have long been repaid, but India's gold remained there. Why? Logistically, it did make sense. The gold would be near the London bullion market, so if the need came, it could be easily accessed. Then why is it being brought back now? Well, because of two reasons. One, India's foreign reserves are very healthy now. They stand at $688 billion, enough to cover more than 11 months of imports. So the RBI is more confident. A repeat of the 1990s looks virtually impossible now. Secondly, because of geopolitics. Yes, Britain is on good terms with India, but equations can always change. And if they do, a big chunk of our gold will be on British soil. What if they decide to freeze it? Or worse, sell it off? That's what the West is doing to Russia. When the Ukraine war started, Russia had around $600 billion in reserves. That's gold plus currencies plus assets. Nearly half of that was held abroad, mostly in Western countries, $300 billion. And what did the West do? They froze those $300 billion in assets. उसका पैसा तो दो. Russia could not access its own wealth. वो क्राइम करता है तो रोकना पड़ता है. India and Britain are not going in that direction, but it's always better to have your assets at home, especially if your economy is robust. The RBI is thinking along the same lines. They have around 855 tons of gold in reserves. 855 tons. Around 510 tons of that is now held at home. So more than half is within India. A similar operation was done in the month of May this year as well. The RBI brought 100 tons of gold from London. And now another 102 tons. तभी मैं कहती पहले भी तो की थी. More in the future. Reports say the government is open to such operations, but not this year. And it's not just about repatriating gold, it's also about stocking up. The RBI bought 32 tons of gold from April to September. Gold made up 8% of the reserves in the month of March. Now it makes up more than 9% of India's reserves. So clearly, the Reserve Bank is on a buying spree. The question is why? Because gold is a safe asset. It is not volatile. It is reasonably liquid. And it can diversify your reserves. You may have noticed that in recent times. When there is a war or natural disaster, gold prices remain stable.
or they increase, which is very different from currencies or oil, which can go either way. So it's a good backup for central banks. It's good for them to have more gold. In fact, central banks hold nearly 20% of all gold ever mined. We have a list. The US has around 8,000 tons of gold. अच्छा Germany has more than 3,000 tons China of gold. कितना है? Italy has more than 2,400. China and so बताओ। does France. But guess who outranks all of them? ओ चाइना Indian India. households. Oh. India Ordinary household. Indians are sitting on 27,000 tons of gold. I'll repeat that, 27,000 tons of gold. Yes, it's clearly an obsession. But in those countries, gold makes up almost 70% of government reserves. Compare that to developing nations. In China, it's 5%. In India, as I said, it's 9%. So expect this landscape to keep evolving. Of course, that's a discussion for another day. Today, it's all about celebrating this reversal. From pledging gold abroad in the 1990s to proudly bringing it back home now. It's a story of India's economic resilience and rise. भाई दिवाली की तो डबल खुशियां मनानी चाहिए अब, क्योंकि अपना गोल्ड जो मेरे को लग रहा था शायद सेफ कीपिंग के लिए वहां भेजा है कि आप हमारे वहां पे जो अपने वॉल्स में रख लो सेफली, वो कहानी नहीं थी। कहानी ये थी कि हमें पैसों की जरूरत थी, अपना गोल्ड उनके वहां पे रख के उनसे पैसे लिए हुए थे, और ये 1990s की बात है। और अब हमने वो अपना गोल्ड पहले मई में कुछ टन मंगवाया था, कोई 100 टन मंगवाया था वापस, और अब हमने एक और 100 टन के आसपास फिर से वापस कुछ अभी भी वहीं होगा। अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इस साल तो नहीं मंगवाएंगे, वो पता नहीं कितना हमने दिया। और ये जो 100 टन आया है अभी 102 टन, वो कह रहे 20 हाथियों के बराबर है, इतना सोना आया है, और चुपचाप लेके आए हैं, बहुत सीक्रेटिवली लेके आए, किसी को पता नहीं चला है। अपने चार्टर्ड प्लेन्स भेजे हैं, उसमें वो लेके आए हैं, और यहाँ लाकर अब कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वोल्ट से, मेरे ख्याल से मुंबई और कहीं और बता रहे थे, शायद गुजरात बोल रहे थे, वो पुणे या कहीं वहां पे उन वोल्ट्स में डालेंगे, जैसे मूवियों में होता है ना, मूवियों में वो वोल्ट्स, उस टाइप के वोल्टों में ये अपना जो सोना अपना था, जो काइंड ऑफ गिरवी करके रखा हुआ था हमने, वो किया है। क्योंकि अब मोदी जी को यकीन है कि अब हमें ऐसे ये उस टाइप की नौबत अब हमारे देश में नहीं आएगी। हमारे पास इनफ पैसे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम वो रिजर्व्स जो अपने पैसे हैं वो यूज कर सकते हैं। अब गोल्ड हमारा हमारे देश में ही रहेगा। कमाल था यार सुन के। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपना पैसा अपने पास रखिए। हाँ, अपना वही That's कह it. तो रहे, क्योंकि रशिया का freeze एग्जांपल लड़ाई है ना, झगड़ा हो जाए, वही। अगला बंदा फ्रीज कर दे, हाँ, सबसे बड़ी थ्रेट वो है। सबसे बड़ा, वो सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। अपना पैसा अपने पास होना चाहिए जिससे कोई फ्रीज ना कर सके। और ये सब बातें हुई हैं वॉर्स की वजह से, नजर आया कि क्या टैक्टिक्स वेस्ट कर रहा है। और जब ये वॉर हुई थी यूक्रेन वाली, बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, हर बंदा यही देख रहा था कि क्या टैक्टिक्स वेस्ट चलता है और उसे कैसे काउंटर करना है। इसीलिए चाइना ने फर्स्ट थिंग की है कि टेक्नोलॉजी बाय बाय कर दी वेस्ट की। सारे उनके कंप्यूटर्स अपने होने वाले हैं, लैंग्वेजेस कंप्यूटर के अपने, और सब कुछ अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं पूरा चाइनीज में। इसीलिए हमने देखा था, एक और ब्लॉगर गया था जो चाइना में, कहता सब कुछ उनका अपना ही है, नथिंग, कोई भी ऐप यूज नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप यूज कर सकते हैं बट पीपल डोंट यूज। नहीं, और उसने ये भी बताया था कि जैसे उनके पास टिकटॉक का ऐप है, उन्होंने 2 ऐप बनाए हुए हैं, एक बाकी देशों के लिए और अपने लिए जो है चाइना के लिए उनका टिकटॉक का ऐप अपना अलग से ही है। मतलब उन्होंने अपना भी अलग बनाया हुआ है एज कम्पेयर, ये नहीं कि वो अपना बनाया हुआ भी पूरे वर्ल्ड में सेम यूज कर रहे हो, अपने लिए उसका अलग ही वर्जन बना के बैठे हुए हैं। तो उससे पता चल रहा है कि वो कितने मतलब सोच के बैठे हुए हैं कि कल को हमने जब लड़ना है दुनिया से तो कोई हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं हो सकता, हमें कोई नुकसान ही नहीं हो सकता। पर यार ये तो कमाल कर दिया हमने। वेरी गुड मूव, वेरी गुड मूव, वेरी प्राउड। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।